and our memories of relationship all the way up to the West Indies, Jamaica, Montego in the early 70s and the mid 70s. So I'm going to do the message on this very historic and auspicious occasion. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvighanam Kuru me deva Sarvakareshu sarvada Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namah Tasmai Shri Guruve Namah Tasmai Shri Guruve Namah Om Shanti 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 Ya Pundendu Tushar Har Dhavala Ya Shubra Vaspravritha Ya Veena Vardanda Manditara Ya Shweta Padmasana Ya Brahma Chuta Shankara Prabhidhir Devai Sada Vanditha Samam Patu Saraswati Bhagavati Nishesha Jajapaha Om Mahasaraswataye Vidmahe Brahmaputre Dhimahi Tanno Saraswati Prachodayat Om Saraswati Namastubhyam Varde Kamarupani Vidyarambham Karishyami Siddhirbhavatu Me Sada प्रेम से बोलो श्री सरस्वती माता की जय। ओम शांति शांति शांति। He has told that still also I will tell you that he is from Guyana and he has met Gupta sir, Gupta ji, MKG in Jamaica. Now he is in USA. He was not able to come, that's why he has sent this Saraswati Vandana, and few things also we will share with you. Now we are going to welcome few of our guests. I will request Nainisha and Hushika, please come here. Nainisha and Hushika. Thank you very much for coming and blessing all of us. Please, Sami. Sir, either please. Yes, thank you. Please come and welcome Anil ji. Vikas ji, please. Thank you, Anil ji, for joining us. Thank you very much, Vikas ji. Gupta ji, madam, please come and welcome Maya Devi ji. Have a big round of applause. I think you will work with all this family. Thank you, madam. Thank you, Maya Devi ji. Please take a seat. Now I will request Nima
Gupta ji, please. Thank you very much. Now, before going to the main program, we will just have few visitors. If you imagine like that, then it will be a great thing. Because I can understand, because once I am a Bengali and I understand Hindi, but once I have recorded a Malayali song, which is the most difficult language of India, I can understand how difficult it is if you are not knowing any language and singing a song in that language. So our Jeevan Jyoti ji has sent his one song, Hindi song, which we are going to play. Please listen it, considering that he doesn't know Hindi.
one of the very close friend of Gupta ji, really. Just think if you have to sing some Jamaican song, how will you sing? Like a Jamaican Guyana person has sang this song in Hindi. And he want to say, जो वक्त गुप्ता जी के साथ बिताई हुई है, वो आज भी याद आती है, सुने नहीं देती है, प्यार की बातें सुने नहीं देती है। आई थिंक म्यूजिकल हम एक गाने से लाइक रिकॉर्डेड से खत्म करो तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, हमें थोड़ा सा एक तो होना चाहिए। तो गुप्ता जी ने मुझे एक रिक्वेस्ट किया था कि कोई ओल्ड सॉन्ग लाइक हेमंत कुमार का, सो आई विल सिंग ए सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू। हेमंत कुमार Thank you very much. Very close friends of Gupta ji. Actually, they could not come because of few reasons. So they have sent their messages. So first of all,
we will share the message of Jeevan Jyoti ji. All his friends are in different places of country. They have sent their messages. Now Jeevan Jyoti is USA. On this very moment and this auspicious occasion. First of all, I'm sure the family and the whole staff are very proud to see this project finally mature. From the pictures I have seen, it is indeed a marvel. I'm so happy that your vision and positive constructive management all proved to be so worthy and eventful. Congratulations on the members also. Our members, or one remembers in those early years in Mandeville, in the town of Mandeville, Jamaica, in the West Indies, and in the early 70s and mid-70s, how your pioneering engineering worked wonders for the people there in Jamaica, especially in Mandeville, Boris. Also, we have to remember how the people of Mandeville are now drawing water from taps. Various containers have to be used to fetch water for their destination. Over the years, YG, you have continuously served and utilized your skill and training for the people of India. Even though you have made leaps and bounds of progress in this field, you have not forgotten your karmic duties, your philanthropic duty for your fellow man. Our congratulations and best wishes. And as you continue to perform your karmic duties, in doing so in all humility, we congratulate you. It is Dr. Ram Gupta ji. In 1975, we became a very good friend, had a very good time, we have lots of memories together. We have visited India a few times, observed their achievement over the years. We are very proud of their family. We look forward to reading the book. Keep achieving new heights. We wish you all the best for 2023. Swamiji, distinguished audience, family, Namaste, Sitaram. It gives me great pleasure to be sending congratulations to a master, Namaskar. The divine within me sees only the divine or divinity within you all. This book launch is a journey, must be considered. This book launch of a journey must be considered to be the highest achievement of a veritable genius. How did you meet Mahendra Gupta and his family? The first meeting with his family, we were recommended by friends in Manchester to meet this Indian man. After knocking on the door, one sunny afternoon, we were warmly met by Mahendra and Nirmala and their daughter Archana. It did not take long for me to see a picture of Hanuman bearing a mountain. This brought a flood of happiness and bonding, since my father used to be looking at a similar Hanuman picture where I came from. And he would do his devotion every morning before going to work. What impressed you about Mahendra? He was seen as a master planner. Due to his astute knowledge of engineering, he devised a plan to improve the water supply that was coming from a low-lying area in an adjoining park to move the water to Mandeville Town. The water was transported by main relay pumps and reservoirs for a distance of about 40 miles. It took about 10 years to complete the project. What, in your opinion, was one of his major achievements? Mahendra was a good engineer who applied his knowledge
as far back as 1975. He was specifically recognized by the mayor of Mandeville in a formal ceremony in 1985 as actually 10 years project. The message was one of having adequate water supply to simply flow continuously and not run dry. Prior to this, the citizens had to use rough and shed water and collect it in tanks and drums. But during the right dry weather, we had to purchase water from the National Water Commission. Mahendra was also a close personal friend. Tell us about that. We felt at home with Mahendra and Nirmal, and our children bonded with Hachan and Nishan. We certainly felt at home in their company. They were always cheerful, especially in our weekly getting together with other families, the Acharyas, Kuti Krishnan family. We went on outings, beaches, and satsang. How did he fit into cultural life? We already established a religious cultural organization, Prema Satsang of Jamaica. That's in 1972, 3 years prior to Mahendra's coming home. We benefited from his spiritual experiences and knowledge. He and family attended many satsangs in Kingston and Tarrant, where a small population practiced our Hindu culture. We enjoyed Diwali celebrations, holy celebrations, and many religious celebrations. His family helped to conduct a proper Hindu marriage ceremony for a young couple over an Ashabadu in January 1977. How did you benefit to improve your paternal language? My gentle but profound learning of Hindi was enhanced by simple speech with his children, such as Mama Dedo, Papa Jaru, were simple enough for me to now say, Mai Thora Hindi Samajhta or Bodha. Aajkal Mahendra Sahab ke liye hum bahut khush hain. As part of his journey, he also visited Guyana and Suriname, where Hindi and Bhojpuri are spoken more frequently. What is special about Mahendra? In 1981, Barbara, my wife, and I visited India for the first time. Mahendra's greatest legacy is his precision and caring nature to planet Earth. As a result of his awareness of India, he linked us with his family in Chadar, Mataji and Pitaji, and brothers and sisters who helped us to feel at home. And we visited Taj Mahal, Jaipur, Pink City, Srinagar, Bhubaneswar, Jagannath Puri, Trivandrum, Kanyakumari, is the Vivekananda Rock, and 4 weeks of bliss. You maintain connections with Mahendra. Tell us a little bit about that. Our great fortune was to attend Nishan's wedding to Nima, 2005. We were blessed to again visit Bharat and enjoy the company and comfort and take in the golden track, which is between Delhi, of course here at Taj Mahal, and Jaipur and back to Delhi, plus Hardwar and Rishikesh. We are impressed by his kind-heartedness, especially for the development of the unfortunate who need better water supply, one of the main ingredients for good health. Are there any last wishes you'd like to convey to Mahendra? Sure. My best wishes is for this special presentation of a journey by Mahendra. Hari Om Tat Sat, Namaskaram. The divine within me sees only the divinity in each and everyone attending this celebratory function. Hari Om Tat Sat, Om Shanti, 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 Hari. MKG to introduce our Guruji. Please. नमस्कार सबको। गुरुजी के बारे में परिचय देना मेरे लिए एक बहुत इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि गुरुजी के बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में, उनके काम के बारे में
और उनकी जो कर्मयोगी चल रहे हैं आजकल देश विदेश में, अगर उसका वर्णन करें तो पन्ने पे पन्ने लिख दिए जाएंगे। सबसे पहले मैं गुरु जी का ये धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 10 दिन से गुरु जी का व्यस्त कार्यक्रम बेंगलोर में श्री श्री रविशंकर जी के कैंपस में चल रहा था मेडिटेशन का, और वहाँ का बदबू था। मैंने उनसे छोटी सी प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मैं ज़रूर आऊँगा, आपका ये है, और मेरा इन्होंने सम्मान रखा। कल रात को 12 बजे ये बेंगलोर से आए हैं सुबह, और आज शाम को वापस जा रहे हैं सी फंक्शन के लिए। गुरु जी मैं अपने जैसे पर धन्यवाद देता हूँ आपका। दोस्तों, एक दिन मैं अपने ऑफिस में कमरे में बैठा था और कुछ सोच ही रहा था कि लगभग 11-12 बजे एक मित्र के साथ मैंने देखा एक भिक्षु, 6 फुट लंबा भिक्षु, चेहरे पे प्रतिभा चमक सी, एकदम मेरे कमरे में आगे खड़े हो गए। मैं चौंक गया कि क्या है, कैसे है। तो मेरे मित्र ने बताया कि ये वेनरेबल संगा सेना जी हैं जो लेह लद्दाख से हैं और वहाँ पर एक मॉनेस्ट्री चला रहे हैं। इनको कुछ पानी की समस्या है, पानी का कुछ है जो अगर हल कर सकें। तो मैंने जाने कैसे कहा गुरुजी मैं कोशिश करूँगा। इसको होने के बाद मेरे दोस्त तो गायब हो गए और मेरे को गुरुजी के साथ लगा दिया। उस दिन के बाद से कुछ ऐसा है, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ, जब से मैं गुरुजी से मिला हूँ, मैं कोई स्पिरिचुअल आदमी नहीं हूँ, मैं रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, मैं ना पूजा पाठ ज़्यादा करता हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, लेकिन जब कभी भी गुरुजी से मेरी मुलाकात होती है, कोई बात होती है या कुछ होती है, वो सब हो जाता है। गुरुजी आप देखेंगे एक छोटी मोटी संस्था नहीं, लेह लद्दाख हिमालय जहाँ टेम्परेचर माइनस चला जाता है, 200 एकड़ के ऊपर एक ज़मीन पर एक ऐसी संस्था बनाए हुए हैं जहाँ जन्म से लेकर मरण तक का पूरा विवरण हो। इन्होंने अपनी कर्म निष्ठा से जहाँ पर बिल्कुल बंजर था, बरसात 1 mm भी नहीं होती है, धूल थी, उस एकड़ पर इन्होंने और पता नहीं क्या लगाकर 200 एकड़ के उस पर इन्होंने हॉस्पिटल से लेकर एक फनल तक जमा किया है। हॉस्टल में एक हाई टेक है जहाँ बच्चों को जन्म दिया जाता है जो डेस्टिट्यूट होती हैं, जो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में स्कूल्स हैं, ऑर्फेन्स हैं, 80 साल 90 साल के मैंने देखे जो लोग वहाँ पर छोड़े हुए थे, जिनको गुरुजी अपने प्यार से उनको कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये कैंपस ऐसा है कि जहाँ कर्म से जो करते हैं, और भी कहते हैं कि जब कभी लास्ट का जाएगा, हमने यहाँ पर एक संदर्भ पाला बनाया हुआ है, वहाँ मोक्ष होता है, मेडिटेशन की बात है। इतना ऐसे उसको संभालना और स्वास्थ्य के सब कुछ ना, इतना के होने के बाद में भी रात दिन ट्रेवल करना, जैसे मैंने बताया, एक बहुत बड़े कर्मयोगी का बात है। मैं ज़्यादा नहीं समय लूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि सब अपने परिवार की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुजी आप, मौसम खराब चल रहा है, फ्लाइटें रुक जाती हैं, मतलब क्या क्या हो जाता है, आप 11 बजे आए, ये भी था, आए सुबह सबसे पहले पहुंच गए, आपकी ब्लेसिंग हमें मिलेगी, इससे बड़ी हमारे लिए कुछ नहीं। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वैसे गुप्ता जी ने काफ़ी कुछ बताया गुरु जी के बारे में। अब गुप्ता जी भी एक जौहरी है जो हीरे को पहचान पाते हैं। अब हम जो है MIMC यानी जो महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर है, उसके बारे में कुछ जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। मेडिटेशन सेंटर के बारे में जानेंगे। Combined with the centuries-old Buddhist heritage, makes it one of the most scenic and culturally unique places on earth.
Many visitors visit Ladakh to enjoy the serene ambience, pleasant weather, and the natural beauty of this place. Ladakh shares its border with China and Pakistan, and the Indian Army makes up a large part of the area's population. From this ground, a young soldier who was sincerely serving his duty one day very silently left army with the intention to serve his people and society. Born in a humble farmer's family, Tsering Namchuk was a curious child, always wondering about creation and the existence of even the smallest things. At the age of 17, he joined the Indian Army. One day, in response to an inner spiritual calling, he decided to shed his mundane life and enter into the stream of Dharma with a new name, Sanghasena Mahathera. Venerable Sanghasena, after having gone through training of a soldier, decided instead to be the soldier for the Buddha. Soon after completing his studies as a monk, Sanghasena returned to Ladakh, and in 1991, he set up the Mahabodhi International Meditation Center. Once a dry, barren land, has now The Mahabodhi Maitri College Home was established. Apart from human lives, Sanghasena has also transformed a huge desert land into a sanctuary of planting thousands of trees along with orchards, herbal एक प्यारी सी मुस्कान लिए हुए चेहरा, सीधे साधे से और डाउन टू अर्थ एक इंसान कितने महान है। अब मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें आके रोशनी दें। गुरुजी प्लीज। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. May all the Buddhas and Bodhisattvas, Devas and Nagas, saints and sages from all the directions of the universe may kindly look at all of us and shower their blessings upon all of us for the success of our coming together in this beautiful place this morning. Our distinguished guest, our very dear and respected Shri M.K. Gupta ji and all his lovely family members and relatives who have gathered in this magnificent hall of the huge complex known as New Town Square. Very, very good morning to all of you. Hearty welcome to this special gathering. It is my great honor and privilege to come and be part of this yet another very historic gathering. I think so. It has been my pleasure to have the association with Mr. M.K. Gupta ji and his family members now quite some time. And I had opportunity to visit this place
when they just started the foundation line ceremony. And since then, it has been my pleasure to visit quite a few times and observe how this magnificent complex is coming up. And this has been truly something very special for me to see how through commitment, dedications, and leadership, something from nothingness can come up such a thing in such a short period of time. And even during the COVID pandemic, where the whole world was paralyzed, it was not easy to continue our normal works, and particularly such a huge project. But even during this most difficult, challenging time, under his dynamic leadership of Guptaji and his wonderful dynamic team, his dynamic son Nishanji, where is he? And they always stay behind. Nishanji, Vikas Guptaji, and the whole team. Yes, through, first of all, the great leadership of Guptaji and their hard work, commitment. Look, what you see, I don't need to explain. And also one specialty I have seen is quality. You go and see every small part of the whole project, the maintain quality, which is important. And this is not something very great achievement for Guptaji and his team, but this is a source of inspiration, motivation for many people and many people to come in future. And today we have gathered for another important program. I think a wonderful book have been prepared on the wonderful life journey of M.K. Guptaji, starting from his childhood, Jamaica and other places, and finally coming back to India and giving service to our own country, and here now you can see it. And I'm very sure that this story of this huge complex and the story of his life stories will be a source of inspiration, great source of inspiration, encouragement for many, many people to come. From his life stories, the young people who are in crossroads do not know what to do, whether if they take up something, whether they will be successful or not. Naturally, many young people have this kind of difficulties to make a decision. And having read this book on M.K. Guptaji, having known the life story of Guptaji, having seen this huge complex, all the young people who have a rebelling mind, perplexed, complex mind, what to do, whether if I take up something will be successful or not, all this cloud and smoke, so all the doubt and suspicion will go away. They will take up, they will make a final decision to go ahead. And anything, if somebody takes up with determination, is bound to be successful. There is absolutely no question. Yes, here and there, the person may stumble or fall down here and there, but with a strong determination, with a clear vision, any person make a decision, start the work, will be successful. That's the example you can see here. So
I will not take much time. I'm sure there are so many others, wonderful people, family members, close friends of Guptaji's are here to share their experience, their joy on these special occasions. Ever since I met Guptaji and our friendship kept on growing. Today, Guptaji and his family members have become a part of our ashram. Just you have a glimpse here, and I must express my profound appreciation and thanks Guptaji and his team to display a brief introduction to our ashram based in Ladakh. Guptaji visited my ashram several times, and he has helped us the water projects, he and his team, and because Dolaji, is there Dolaji is here? Yes, Dolaji. They have, of course, under the guidance and leadership of Guptaji, has helped us to design yet another very interesting big project in Ladakh, the Buddha Park for World Peace. And then helping us in many ways, and I'd like to thank Guptaji and the team, and also I'd like to take the opportunity to extend our humble invitations to all of you to visit my humble ashram and be our guest at our humble guest house ashram in Ladakh. Ladakh has become a very important tourist destination today. Ladakh was not much known to our people of our own country. It is after separating Ladakh from the Jammu and Kashmir state and granting the Union Territory status, the Ladakh came to be known to our people, and since then, lots of people started coming. It is a beautiful part of our country. It is a corner of our country, and not far from here, friends. Sometimes you need more than 2 hours to reach from Gurgaon to Noida. Ladakh, just 1 hour flight. And my ashram is just 15-minute drive from the airport, right? And I'm happy to inform you, we have a new Ladakh under the great leadership of our Pradhan Mantri Narendra Modi ji. Things have changed. We have good infrastructures, we have good conditions, good condition road and others. You will have no problems. So please to come to Ladakh, spend some time practicing yoga, meditation, and spirituality. We want to develop Ladakh as a distinct place, like a new capital of yoga, meditation, and spirituality. India itself is a small world with sawa so crore, so population. Our people need a nice small place somewhere where people from a big city like Delhi can go and spend some time and rejuvenate themselves through yoga, meditation, and spirituality. And we are working hard to build up the basic infrastructures and the basic facilities for all of you to come, stay sometimes, practice yoga, meditation, and recharge yourself, come back and continue your work in different fields in a big city like Delhi. And yes, I will not take much time. I invoke the blessings of the Lord over our dear M.K. Guptaji and his entire family members. I invoke the blessings of the Lord upon all his family members, friends, relatives here who are gathered here. I also offer or invoke the blessings of the Lord upon all the people of our country. May our country become very strong in all aspects.
physically strong, mentally brilliant, culturally rich, spiritually enlightening, and materially prosperous, and globally friendly. We believe it is the century of Asia. It is the time of Asia. It is the time within Asia. It is the time of India to lead the world with our ancient wisdom, yoga, meditation, and spirituality. One side, the world is progressing, making fantastic, unbelievable progress. Science, technology, and all these things. But on the other side, the spiritual values are not there. Then all modern development may lead towards destructions. This is what happened. The Western countries have done excellent in, building technology, economy, but spirituality is not much there. So India, like our great leaders, Narendra Modi, you celebrate like Karma Yogi. So country like India, time has come to country like India to lead the world with their ancient wisdom. I once again wish our very dear and friend M.K. Guptaji and his entire family member all the best. Highest congratulations for this successful journey of your life and all achievement. May the blessings of the Lord be with all of you. May you all continue to enjoy peace, happiness, harmony, further success both spiritually and materially, further success both inwardly and outwardly, physically and mentally. Thank you so much. A few years before, actually, when Guptaji thought of writing this book, one page was written by someone. And if you read it now, it is a total brief of that book. Archana is not with us, but so surprisingly she has written that one page, which is totally like everything is there of that book in one page. Nainisha and Hushika help us to present you that single page. We will present that. How many people can say that they touched so many other lives? I know someone who can. I know the story of a young boy born in a small obscure village who dreamed a dream to not only change his own world, but that of his family as well. He set impossible standards for himself, which he not only scaled, but surpassed. I know the story of a young man who went to the West Indies at a time when many people had never even seen a telephone. And he established a link across the oceans, sharing our culture, country, and technology to make a change in the local community. I know the story of a man who time and time again rose like a phoenix from the ashes to rewrite his own history and overcome destiny to be the self-made man he is today. I know the story of the seed that is now an oak tree, which shelters and nurtures the many souls that come across its path. Please be the hero of all my stories, the son, the brother, the husband, the friend, the boss, the grandfather, the father, Mr. Mahel Manu. Big round of applause. मैं इस सफर के झांकियों में एमके जी सर का आवाज बनूंगा और जिस सफर के आप सब हम सफर बनेंगे, ये मेरी आवाज नहीं, एमके जी की आवाज है।
down there. मेरे 7 पीढ़ियां मेरे माता जी और पिताजी, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके आशीर्वाद से ही हूँ। मेरा वो पुराना घर जिसमें मेरा जन्म हुआ, वो बाग बगीचे, वो गलियाँ, वो मंदिर जिन्हें मैं आज भी भुला नहीं। मेरा पाठशाला का पहले दिन अपने कक्षा के अध्यापकों से मिलने से लेकर उनके चाहिए विद्यार्थी होने तक, पेड़ के नीचे पढ़ते हुए मेरा बड़ा होना, पानी ही पानी, बचपन से ही मेरा पानी से लगाव था। उस छोटे से गांव से फिर मैं देश की राजधानी की ओर चला। एक नया शहर, नई पाठशाला, नए मित्र। वक्त के साथ मैं और मेरी इरादे बुलंद होते रहे। जून 1966 फिर एक खत आया और फिर यहाँ से मेरी व्यावसायिक सफर शुरू होती है। एक इंजीनियर की सफर। एक सही आकार लेते हुए एक इंजीनियर। 1971 मैं एक ग्रेजुएट इंजीनियर बन गया। फिर जून 1971 उसी साल मेरी नौकरी और आमदनी का सफर शुरू हुआ। मैंने नवयुग इंडस्ट्री में ज्वाइन किया। फिर मुझे मिलती है मेरी मनचाही जीवन संगिनी। बड़े धूमधाम से हमारी शादी होती है। परिवार के सब लोग आते हैं। कुछ मीठी यादें। 28 दिसंबर 1973 मेरे घर आई एक नन्ही परी अर्चना और उसके साथ ही एक इंटरव्यू का बुलावा भी आता है। फिर मेरे हिंदुस्तान के बाहर का सफर शुरू होता है। वो था जमाइका। जमाइका ने खुले दिल से मेरा स्वागत किया। वहां मैंने काफी दिल लगाकर काम किया, काफी व्यस्त रहा। मुझे कई नए लोग मिले, नए मित्र हुए जो आगे चल के मेरे परिवार का हिस्सा बन गए। फरवरी 1977 मेरे प्यारे बेटे निशान का जन्म हुआ। एक घरेलू वातावरण में संस्कारों के साथ दोनों की परवरिश हुई। मैं भी काफी समय अपने परिवार के साथ बिता रहा था।
एक सुनहरे दशक के बाद 1985 मेरी देश वापसी हुई और उसी साल मेरी मुलाकात मेरे महान गुरु S.G. देवलालीकर जी से हुई। 1987 में मेरी कंपनी LKT कंसल्टेंट की स्थापना हुई। मेरी पहला ऑफिस अलकनंदा की तस्वीर। धीरे धीरे आगे चले, पर इस 35 साल में हमने कई प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट पर काम किया, कई बड़े नामों के साथ जुड़े रहे। ये कुछ नाम हैं, ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कुछ नामों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। मैंने काम किया। फिर 1992 अपने बढ़ते हुए परिवार के लिए एक अच्छा सा आशियाना ढूंढा, 1250 वसंत कुंज। और उसी साल 1992 मेरी प्यारी बेटी अर्चना की शादी विकास जी से हुई। 2004 प्रकृति से जुड़े रहने के लिए मैंने ये फार्म हाउस लिया और उसके एक साल बाद 2005 मेरे प्यारे बेटे निशान जी की शादी नीमा जी से हुई और हमें और एक बेटी जैसी बहू मिली। तो 2006 में IPA दिल्ली चैप्टर में मुझे चेयरमैन बनने के लिए न्योता दिया। फिर मुझे IPA का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। KBD के बिल्डिंग की स्थापना हुई। आज हम जहाँ पे हैं ये वही मॉल है जिसकी स्थापना हुई। स्टेट एवेन्यू में फ्रंट पेज में हमारी तस्वीर आई। कुछ प्रशंसाएं और कुछ वाहवाही मिलती रही। कई प्रसिद्ध व्यक्तियों से मुलाकात हुई। मेरे जीवन में 7 का आंकड़ा बहुत महत्व रखता है। 7 जो मेरे 7 पीढ़ियां, मैंने फिर 7 फेरे लिए थे। 7 समुंदर पार गया मैं और मेरे 7 प्यारे भाई हैं। ये मेरा परिवार जिससे मैं हरदम जुड़े रहना चाहता हूँ। अब जब मैं रुककर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है समय कितनी गति से बीत गया। मुझे मेरी दादी जी की गाई हुई वो कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं जो अक्सर गुनगुनाया करती थी। उमरिया बीत गई मेरी, ना पहने कभी शाल पोशाके, ना खाई हलवा पूरी, यही उमरिया बीत गई, यूं ही उमरिया बीत गई मेरी। धन्यवाद।
वापस आया करते। हम करने जा रहे हैं किताब का लॉन्च। आई विल रिक्वेस्ट गुप्ता जी एंड गुरु जी लॉन्च द बुक। संघर्ष, काफी उपलब्धियां, सब कुछ है इस किताब में। साल से ऊपर हो गया सर इसमें काम करते रहे। ये सिर्फ कुछ दिनों की जो है से नहीं बनी है किताब। ये काफ़ी समय लगा, काफ़ी सोच, काफ़ी लोगों की मदद के बाद ये किताब पूरी हुई है। ये घड़ी जिंदगी में बहुत कम लोगों को ही नसीब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये घड़ी को हम अपने दिल में तस्वीरों में रख देंगे, सजा के रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। उपस्थित दोस्तों, इतना आपने इतना समय दिया, इतना सुना, और एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं सिर्फ हिंदी में एक 10 लाइन मैंने लिखी हैं, शायद उसमें सारा इसका सारांश हो। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसको कहूँ एक बार। सूर्य की किरणें अपना सुनहरा उजाला फैलाती रही। पवन का झोंका दिन पे दिन खुशबू में धूल का साया देता चला गया। कड़कती धूप ने रंग तपता रहा। शाम आई, एक अजीब सा रंग लेकर और चली गई। चांद तारों की चांदनी अपनी मध्यम रोशनी में एक नया संदेशा देती रही। अमावस्या की काली रात ने भी अपनी आस्था की कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर सुबह हुई, पल बीतते गए, समय बीतता गया, यूं ही युग बीतता गया। कुछ लोग खास थे, वो बहुत तो अनजाने से हो गए। एक यादों के माया जाल को छोड़कर यूं ही मन कसकता रहा, कभी हंसता भी रहा। जो आंखों के सामने कुछ अंकुर पनपे थे, जो आंखों के सामने कुछ अंकुर पनपे थे, वो आज छायादार वृक्ष बनकर खड़े हैं और उनके नीचे बहुत अनगिनत अंकुर फिर छिल रहे हैं, फिर खिल रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं। यह जिंदगी ऐसी फिसलती जा रही है, उमरिया बीतती जा रही है। क्या खोया क्या पाया, इसका हिसाब ना करो, क्योंकि न कोई शिकवा है, न कोई शिकायत है, सिर्फ शुक्रिया है उसको जिसने कहीं किसी कोने में छुपकर बैठा दिखता रहा है और आगे दुनिया चलाता रहा है। दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा ना राइटर हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये सब लोगों ने कहा किताब बात किताब की नहीं है, 5 मिनट अगर दें एक बहुत बड़ी
ये है कि ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ ना मैं राइटर हूँ। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने साथ में जो फोटोग्राफ हैं उनको भी मतलब इधर बुलाना चाहूँगा अपने साथ। अगर 5-10 मिनट दें तो कुछ बात किताब की नहीं है, बात जिंदगी की भी है। शायद सबके लिए ही वो एक लागू की बात है। जैसे मैंने कहा, ना मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, ना मैं कोई राइटर हूँ, ना मेरी कोई अपनी किताब को एक जैसे ऑथर करने की बात थी। कुछ ऐसा हुआ कि पिछले 60 साल से शौक था चीज़ों को इकट्ठा करने का। गांव में पैदा हुआ, कुछ चीज़ें मिल गई वहाँ की। फ़ोटो खींचने का शौक था, फ़ोटो खींचे। जमैका में रहा, पता नहीं क्या क्या करता रहा, हाथ लगी। आने के बाद दोस्तों ने कहा, आपका जमैका का जाना कैसा रहा, आपकी ज़िंदगी कैसे रही, कुछ बताओ। बस मन में ही आया कि क्यों ना उनको इकट्ठा करके जो 60-60 साल की चीज़ पड़ी है उसको एक इकट्ठा कर दूँ। हो सकता है आने वाली जनरेशन, हो सकता है कुछ आने वाले जानने वाले उसमें से कुछ कहीं ना कहीं फायदा उठा सकें। इसमें बहुत कुछ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे जीवन से जुड़े हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, कहीं ना कहीं किसी को मैंने छोड़ा है, छेड़ा है या वर्णन किया है। हो सकता है उसमें इंफॉर्मेशन पूरी सही ना हो, लेकिन फिर भी मैंने अपने एक मन की बात कही है। मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे अपने उसके बाद में स्कूल के, कॉलेज के, उसके बाद जो है रिश्तेदार हैं, सब कुछ है। प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैंने अपना प्रोफेशनल एक वो किया। स्पिरिचुअल का कुछ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको मैंने एक टच देने की कोशिश की है। इसमें मैं सिर्फ 3-4 बातें कहना चाहूँगा कि जो मैंने पाया। हालांकि मैं ना कुछ टीचर ना फिलोसफर हूँ। 3 चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी जो बिल्कुल सच है कि एक तो डेस्टिनी, कोइंसिडेंस एंड लक। डेस्टिनी की बात तो ऐसी है कि आपने देखा होगा कि गांव में पैदा हुआ, कुछ नहीं इच्छा थी, लेकिन एक दिन जो है जो मेरे जो सबसे छोटे चाचा जी थे, जैसे मैं मानता हूँ उनके धर्मपत्नी जी बैठी हैं, वो मेरे रहे थे। उन्होंने कहा गाँव से आ जाओ, आपको हमारे स्कूल में जमा करना है क्योंकि मैं वहाँ पर टीचर हूँ। मन नहीं था, चले आए, पढ़ते रहे। उसके बाद जो है ये एक इंजीनियरिंग बनने का बड़ा सपना था कि इंजीनियर बनना था। बहुत मेहनत की, कुछ भी कहीं ना कहीं से कितने करो उतने पढ़ने में उतनी थे, ना IIT में आ पाए ना कुछ हो पाए। सडनली एक दिन शाम को एक चिट्ठी आती है कि आप आ जाओ, आपका इंटरव्यू है। और पता लगा कि जोधपुर 600 मील दूर पर ट्रेन में बैठ कर जाना है। कल टिकट कटवाया, पहुँचे वहाँ पर, जेईई में एडमिशन मिल गया। ये भी एक इत्तेफाक की बात थी। उसके आने के बाद जो है सिविल इंजीनियर की सबसे कम डिमांड होती थी, कोई जो है नौकरी नहीं मिलती थी, तो हम जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स थे उन सबको लगा दिया जाता था कि जूनियर इंजीनियर, थोड़ा प्रमोशन देकर। पहली नौकरी मिल गई थी मतलब और मेरिट के साथ में। फिर एक बार ऐसे करते हुए DA में एक मेरे रिश्ते थे और वो उस टाइम यूपी जल निगम में पोजिशन में थे। मिले मेरे को, कहने लगे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं यहाँ पर जिंदगी में JEE हूँ। अरे आप तो इंजीनियर हो, आप इंजीनियर क्यों बन जाते, हम आपको लगा देंगे। मैं कहा ये तो इम्पॉसिबल है आज की डेट में, कहते नहीं है। और मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, बल्कि उनकी बेटी अलका जी आई है। अलका जी कहाँ है? उनकी बेटी जो है मेरठ से चल के आई है, जो कि बहुत छोटी थी। उन्होंने मेरे को एडमिशन दिलवा दिया यूपी जल निगम में। और क्या एक तकदीर की बात है। दूसरी जो होती है कि गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जो मुझे प्रोजेक्ट मिला वो पूरा रिलेटेड टू वाटर। वाटर इज द अनदर थिंग विच आई सेड फ्रॉम माई चाइल्डहुड to everything. I wanted to change my subject to structure and everything,
बट आई वॉज असाइंड कि आप ये गाजियाबाद की पूरी जो मास्टर प्लानिंग हो रही है, आप इसका पूरा वाटर सप्लाई सीरीज करिए। और मैं आपको बताऊं 1971-72 में हम आए थे और जो रख के वाक़े पर विद इन 2-3 years हाउ द वाटर इम्पोर्टेड इन माई माइंड दैट आई कंप्लीटेड दैट मास्टर प्लान। और एक डेस्टिनी की बात ये थी कि उन दिनों जो है इंडिया की तरफ से कुछ फॉरेन असाइनमेंट सेक्शन के फार्म भरे जाते थे कि भर लो, अफ्रीका चले जाओ, यूरोप चले जाओ, ये चले जाओ, तो लोग भर देते थे। मेरे किसी दोस्त ने कहा कि मैं तो यूपीएससी में हो गया हूँ, आप क्या करोगे इसका, या मेरे पास पड़ा हुआ आप भर दो। मैंने वैसे ही भर दिया असिस्टेंट इंजीनियर और जमा कर दिया। मैंने कहाँ होता हुआ वो फॉरेन असाइनमेंट सेक्शन नॉर्थ ब्लॉक चला गया, सब कुछ भूल गए। अचानक से 2 साल के बाद में शाम के टाइम एक टेलीग्राम आता है, कल सुबह नॉर्थ ब्लॉक में आप हाजिर हो। नॉर्थ ब्लॉक का नाम सीटो पावर शामशंकर, हम घबरा गए, क्या सबसे छोटे थे। वहाँ पहुँचे तो देखा भीड़ लगी हुई थी, पूरा चकवाड़ा था, चीफ इंजीनियर, सेक्रेटरी, बड़े बड़े इंजीनियर से बैठे हुए थे। पता लगा कि कुछ डेलीगेशन जो है आया हुआ है, वो कुछ 7-8 इंजीनियर्स को ढूंढने आया है और वो पानी के बारे में, और यहाँ तो सब लगाए हुए, क्योंकि उन दिनों की बात है 1975 में, जब लोगों के पास में स्कूटर भी जो है फॉरेन एक्सचेंज से मिलता था। $8 में आप कहीं बाहर जाते थे, विदेश की बात एक तरह से सपना था। टेप रिकॉर्डर में जो है किसी का अगर साउंड का टेप रिकॉर्डर भी हो तो बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो 1975 में जमुना का सब लोग बैठे हुए, हमको कहाँ पर छोटा बुला लिया, पूरे दिन चलते रहे इंटरव्यू। लास्ट में हमारा नंबर आया तो कहने लगे अच्छा मिस्टर गुप्ता भाई यू आर द यंगेस्ट वन। ये तो हमने क्या था कि हमने तो लोगों को सबको सेलेक्ट कर लिया है, आपको बुला लिया है ताकि जो है कि देखें कि चलो कोई छोटा मोटा कोई काम। तो एनीवे वन ऑफ द डेलीगेट आस्क्ड मी दैट टाइम, मैंने कहा ठीक है ये कि नाउ यू टेल मी दैट मिस्टर गुप्ता व्हाट यू कैन प्रूव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट so that we can select you from here and take you with this team to Jamaica, West Indonesia. I was having that time, that was my destiny. I consented in my power and I said that sir, I have been involved in many water supply projects and one of the main USP which I am doing is I am doing all these projects through CPM and PERT. तो याद आ गया था एकदम, उन दोनों CPM PERT चला था कि कैलकुलेटर भी नहीं होता था लोगों के पास में, कंप्यूटर की दुकान शुरू CPM PERT के थ्रू चलता था। तो जब वो वर्ड CPM PERT सुना उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी चीज़, नई चीज़ है। तो उन्होंने कहा ओके यू वेट फॉर आउटसाइड, आई विल टॉक यू विल टॉक टू यू। देन दे कॉल्ड मी अगेन and they said that well Mr. Gupta, we all have decided that though we do not have the position but we have got the position of a small site engineer and we will offer you the lowest one, but out of the 90 are you ready to go? तो मैंने कहा मैं तो सबसे छोटा समझ रहा हूँ। सेक्रेटरी साहब अंडर सेक्रेटरी बैठे थे, उन्होंने कहा मिस्टर गुप्ता ये तो मौका ही कभी नहीं मिलता जिंदगी में किसी को, आप क्या है कर लो। आई साइन द एग्रीमेंट, दैट वाज द स्टार्ट and believe me or not it was a destiny because out of the 9 people I came to know later on that it was Mrs. Indira Gandhi who went there to have the non-alignment conference in Jamaica. And she was very popular leader there. The Prime Minister asked कि क्या आप हमको कुछ यहाँ से हमारे लिए कुछ इंजीनियर वाटर के इरिगेशन के भेज सकते हैं। उन्होंने कहा श्योर भेज देंगे। कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि वो नेक्स्ट ईयर को कॉन्फ्रेंस में एज ए चेयरपर्सन देना था, लेकिन उनकी आंटी थी, उससे हफ्ते सिंह जी की डेथ हो गई, तो उनको प्लेन लेकर वापस आना पड़ा। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आई एम गोइंग अलोन टू माय दिस प्लेन, व्हाई डोंट यू कीप सम डेलीगेट एंड लेट देम कम एंड आई विल गिव सम इंजीनियर्स। सो दे वर आस्क्ड दोज डेलीगेट बिकॉज लेटर ऑन दे टोल्ड अस how this happened. Within 10 hours they were asked to go to India. When we stepped down at Parliament Airport, the instruction was given that within 24 hours by hook and crook they must get 10 people, otherwise not this. So all this was charged this thing there because the government of India wanted to recruit Mrs. Gandhi, तो पावर में थी सारा, तो कोई ना जो उनको मिला उन्होंने टेलीग्राम दे दिया, बुला दिया, जो भी मिला करने की बात हो गई। Now when I went to Jamaica, the whole main coincidence was there that again I was the youngest one, not given the job. This is very interesting. I was having the senior person, gold medalist, etc. sitting there, you know. So they gave us next day
they assigned all the people, they gave a new car, brand new car. हमने तो यहाँ पर कभी देखा भी नहीं था कि well, gentlemen, everybody has got a car, everybody has got a flat. You start your work tomorrow, you know. After 10 days, they called us how you were feeling. So about 8%, which was a senior to us, chief here, they said to at that time, sir, we are little uncomfortable. What happened? सर हमारे यहाँ घंटी नहीं है, चपरासी नहीं है और वो बातें चाय नहीं मिलती है हमको ये. So they say that what is this? You know, they asked me, Mr. Gupta. I said that they are all chief engineers, you know, and people like me under so many works. You know, they said no, we have a culture to work ourselves. So I catch up that culture that they want everything independently, and believe me or not, after 10 days they assigned me a job which is a valuable water supply scheme which the gentleman was saying, which was being funded by the World Bank. हमारे तो बिल्कुल वो हाँ छोटे सबसे youngest man, but God destiny was there. That water supply system gave me the exposure to come with the people from World Bank, you know, and gave me the confidence, and I became one of the most popular person in that group there. I stayed there for 10 years. The most exciting part was there that when I was given my first water supply installation, that you have to do it, you know, and Christmas is coming, you have to provide the water in the Christmas to the community, rural community. To provide a water supply in the rural community was a great thing there. So I did in the first 6-8 months, I did my all best and make sure that the water supply is given. And the person who came there to inaugurate that was the Prime Minister of Jamaica, Mr. Michael Manley. When he came there, so I was a person sitting in the bed, and all the chief engineers were there, and he asked me, who is this gentleman? He said, he is the one of those Indian experts who has come. Oh, I remember when I met Mrs. Gandhi, and he promised me this thing there, you know. He came and believe me not, and shook hands with me. That was one of the most amazing moments, smile of my life. That how a similarity has happened, that at least I have achieved something for that. So again, when I came back to India, as I said, coming with Mr. Dillalekar, water is my life. So destiny, life, and of course, I must thankful to everybody that who has been with me in this my journey, and up to now, all my family members, professional friends, and everything. And one of my better half, 50 years, she has been the pillar. So there is a lot of things to do. You will see there is the books will be given to certain people who has a lot of contribution done. As I say, somewhere in this book, people will find a little bit link. I'm talking my family members, I'm talking my friends. Somewhere there, maybe that they will find out some references there, and if they find that is interesting, then it will be my pleasure that I have done something. Thank you very much. Guruji. This is a special appreciation from M.T. Gupta, personal level, as you have come after this thing there.